नमस्कार दोस्तों, यह हमारा है सेकेंड एपिसोड एंड ये फोर्थ वीडियो है। तो आप देख चुके होंगे पहले से तीसरे तक वीडियो 1, 2 and 3 वीडियोस यू माइट हैव सीन एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द क्विज एंड जल्द ही क्विज आने वाला है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर द क्विज एंड दिस आर द क्वेश्चंस। वी विल गो विद द क्वेश्चंस नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? इनमें से स्टेट ऑफ मैटर कौन सा नहीं है? स्टेट ऑफ मैटर कौन से होते हैं? फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये जो है स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं एंड एनर्जी इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर। डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एंड 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो यूनिट होता है। एंड विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस है इसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए? तो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर photosynthesis. Now we will go with the next question. SI unit of work is joule. Joule is the SI unit of work. And which part of the cell contains genetic material? Genetic material के कौन से पार्ट में होते हैं सेल के? Which part of the cell contains genetic material? तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। The tissue responsible for movement in animals is responsible for movement. Muscular tissue is responsible for movements. अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की वजह से वो क्या, बाइनरी फिजन से अमीबा रिप्रोड्यूस होती है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम इज ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से पूरी तरह क्या होता है? स्प्रेड होता है परफ्यूम इन द रूम। द फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसे फ्रिक्शन कहते हैं। दो फोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अपोज करते हैं और उसे कहते हैं फ्रिक्शन। प्लांट लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। प्लांट लूज करते हैं वाटर, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से भी क्या होता है? रेनफॉल होता है। विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? Solar energy is a renewable source of energy. Coal, petroleum and natural gas are non-renewable resource. ये क्या है? Non-renewable resource है coal, petroleum and natural gas. And renewable resource कौन सा है? Solar energy. The cell wall in plant is made up of cellulose. Cellulose से बना होता है cell wall. And now we will go with the 14th question. And the respiration in human occurs by lungs. The instrument used to measure temperature is called thermometer. Temperature अगर मेजर करना हो तो क्या यूज करेंगे? हम थर्मोमीटर यूज करेंगे। थर्मोमीटर यूज करने से हमें हमारा तापमान पता चलता है। फीवर we can see from the thermometer. Transfer of heat by direct contact is conduction. Conduction क्या होता है? कंडक्ट करता है क्या? ट्रांसफर होता है हीट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या होता है? ट्रांसफर होता है हीट, उसे कहते हैं कंडक्शन। एंड नाउ वी विल गो विद द 17th क्वेश्चन। विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस? WBC क्या करता है? फाइट करता है इन्फेक्शंस को। दिस व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन से ब्लड सेल्स फाइट करते हैं इन्फेक्शन के लिए? व्हाइट ब्लड सेल्स। साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किस में से नहीं गुजर सकता? मतलब कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता। इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड में पाया जाता है ब्रोमीन। The strongest force in nature is gravitation. No, sorry. It's not gravitational force. It's
Friction. No, it's not friction. It's nuclear. Understood? The strongest force in nature is nuclear. The strongest force in nature is nuclear. Okay. Nuclear is the strongest force in nature. The next question from geography. The uppermost layer of the earth is called crust. Crust is the uppermost layer of the earth. Which river is called the Sorrow of Bengal? Bengal बंगाल में जो रिवर है वो फ्लो करती है, कौन सी रिवर फ्लो करती है? दामोदर रिवर. और दामोदर रिवर is known as Sorrow of Bengal. The Himalayas were formed due to, किसकी वजह से हुए थे हिमालयाज? प्लेट कोलिजन की वजह से हुए थे. प्लेट का कोलिजन होता है तो क्या हो गए? हिमालयाज फॉर्म हो गए प्लेट के कोलिजन की वजह से. दो प्लेट्स कोलाइड हो गए और उसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया? हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया. रेड सॉइल इज रिच इन आयरन. आयरन से भरा होता है रेड सॉइल. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा होता है? ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स से बनता है. एंड पेनिनसुलर मतलब क्या होता है? तीनों जगह, मतलब फ्रॉम द three side there will be the water is called peninsular, and all the sides water is called island. The western coast of India has Konkan, which is the longest river in India. Longest river कौन सी है? Ganga river is the longest river. Godavari is the longest river in Maharashtra. महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी. Climate of India is influenced by climate of India is influenced by monsoon. मानसून से क्लाइमेट चेंज होता है हमारे इंडिया का. Alluvial soil is best for cultivating wheat. Alluvial soil best for wheat cultivation. The Tropic of Cancer passes through Gujarat. गुजरात से पास होता है Tropic of Cancer. फिर कैप्रिकॉन कहाँ से होता है? फिर देखेंगे, देख लो आप ही ऑन द मैप, यू विल गेट द आंसर. कैप्रिकॉन कहाँ से गुजरता है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल. The natural boundary between India and China is Himalayas. Himalayas are the natural boundaries. A huge mass of ice moving slowly is called glacier. ग्लेशियर कहते हैं वो जो ह्यूज मास होता है आइस. ह्यूज मास ऑफ आइस क्या होता है? मूव करते हैं, उसे ग्लेशियर्स कहते हैं. एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट. सुनामी इज कॉज्ड बाय, कैसे कॉज होती है? अर्थक्वेक्स अंडर द सी. अंडर सी में क्या होता है? अर्थक्वेक होता है, उसको हम कहता है सुनामी. एंड हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे नाउ. वी विल लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री नाउ. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगैन इन 1789 एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757. तो हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. दूसरा क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री. बस्टाइल वॉज a prison. वो क्या था? prison था. And the leader of Russian revolution was Lenin. We are going to highlight this. Come on, highlight हो जाओ. Yeah. तो the leader of the Russian revolution was Lenin or Hitler. Nazism rose under Hitler. Nazism rose under Hitler. The States General in France had three states. The first state consisted of clergy. The first state consisted of clergy. It's not peasant, it's clergy. Okay. Now, the next question. Hitler wrote the book Mein Kampf.
हिटलर ने कौन सी बुक लिखी थी? मेन काम्फ लिखी थी। द मोनार्ची इन फ्रांस वॉज रूल्ड बाय लुइस 16। The symbol of the French Revolution was red cap. Cap. Red cap is the symbol of French Revolution. The Weimar Republic was formed in Germany. कुलक्स इन रशिया वर रिच पीजेंट्स, वो पीजेंट्स थे। वो भी कैसे पीजेंट्स थे? रिच पीजेंट्स थे। कुलक्स जो थे रशिया के, वो रिच पीजेंट्स थे। द ऑथर ऑफ टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट इज लोकी। द ऑथर ऑफ टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बुक है और इसके ऑथर कौन है? लोकी। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। The term Desert Storm refers to Gulf War, and the Napoleon crowned himself emperor in 1804. 1804 में नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज अ एम्परर, अपने आप को किंग बना दिया। कब? 1804 में। किसने? नेपोलियन ने अपने आप को क्या कर दिया? किंग। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्विज एंड आई होप you have subscribed the channel. Thank you very much for your support and please get ready for the quiz on Sunday. Thank you.